Hey, hello, welcome back, MB CET aspirants. Welcome to this new episodes guide. As we had decided कि हम हर एक week में weekly bringing in new champion. So a lot of students had this request कि अलग-अलग college से बुला रहे हो तो पुम्बा से भी एक बुला लो, right? So today we have with us Miss Prachi. She's from Pumba. Okay, she's currently pursuing her MBA. So अभी CET close आ रही है. So just wanted to have an interaction with her. Okay. So we'll get to know a lot of things, guys. Stay tuned. So firstly, I'll just talk brief about Prachi. Prachi is not from an engineering background. Okay, she has done her B pharmacy. Okay, and Prachi just wanted to ask you. I'm very curious that a lot of students are. You have already done your B pharmacy from one of the oldest college. Okay, pharmacy college, and then why did you continue with your M Pharm masters in pharmacy, and then why did you switch to MBA? That is something that we and our students want to know. Okay. The post point was I was most inclined towards the business and means my future plan is about business and MPA Farm is mostly inclined towards the research and that's why I've shifted towards the MBA, not the Farm. Okay, nice. So as you get to know, guys, ऐसा कुछ नहीं होता है कि engineering होगी तो ही आप management में जा सकते हो. Okay, it's more about your inclination. As last time भी हमने देखा था when Nisha we had interviewed Nisha, तो उन्होंने भी बताया था कि girls के लिए बहुत अच्छी opportunities है when it comes to management field. Okay, so Nisha, like you are in Pumba, so just wanted to understand how is your time at Pumba? What all things did you learn? और क्या एक अलग learnings आपने सीखी है through Pumba? So Pumba has given me a transformative learnings. In the most special thing about Pumba is it is a student driven college. Means it is fully based on the students, mostly the activities and the session which are held. It is totally based on the students. Means, for all the opportunities, students are involved in that. Nice, nice, nice. Yeah, that is the best part about, of course, of the top colleges. Okay, क्योंकि GATE, Jamnal, Bajaj, Simsri, Pumba. The best part about them is कि this is student driven. So आपको placement से लेके आपको events and everything is organized by the students itself, right? So now let's come down to the preparation part. क्योंकि as the CET is almost 2.5 months there. Okay. So just wanted to understand, guys, she didn't took a gap. Okay, so कुछ students को लगता है कि gap लेने पे ही अच्छा college निकलता है, तो ऐसा नहीं है. तो उन्होंने गैप नहीं लिया था. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ डिड शी मैनेज लाइक विद कॉलेज, हाउ डिड शी मैनेज द प्रिपरेशन एंड हाउ डिड शी गेट इनटू Bomba then? So, being from the college, we used to have the sessional exams, semester exam. Along with that, we were having the final year project, and also there was an extra add-on project for that. So during this, I was to plan morning session for studying. Used to get up at 5 and 5 to 8, I used to prepare my weaker section. So my weaker section was verbal ability and the quant section. So I used to prepare that in the morning section, where I used to give 1 hour for verbal ability and 2 hours for quant. And then during college hours, if I get a free time or off lecture, during that I used to solve the logical because it doesn't require much focus. And in the night, I used to solve one sectional mock, which give me an edge over all day. Nice. Okay. So, guys, this is something that you need to plan because I have heard a lot of students coming to us asking कि सर ग्रेजुएशन चल रहा है, टाइम नहीं मिलता. ठीक है, टाइम मिलता तो किसी को नहीं है. ठीक है, फुल टाइम वाले को भी टाइम नहीं मिलेगा. इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू मैनेज टाइम मैनेजमेंट, और वही एक मैनेजमेंट एस्पायरेंट की क्वालिटी होती है. द बिगेस्ट क्वालिटी इज टाइम मैनेजमेंट. ऑफ कोर्स एज शी सेड, एक प्रॉपर डिवीजन अगर आप करते हो विद रिस्पेक्ट टू योर all these sections, planning आपका अगर properly होता है, and as you can clearly see, the most important thing what she did was कि वो हर एक section को touch करी थी every day. That is something I feel is very important क्योंकि I have seen students they just pick point एक subject ले लेते हैं, उसी को दिन भर पकड़ते हैं, and then हफ्ते में हर एक section cover नहीं होता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि properly आपका अगर आप coverage होता है, of course you do it well in your exam. अभी अभी जैसे सीईटी पास में है, तो कैन यू गिव सम टिप्स कि क्या प्रिपरेशन टिप्स होना चाहिए स्टूडेंट्स को, बेसिकली whoever is involved into MBA CET जो टारगेट कर रहे हैं कॉलेजेस लाइक कुंभा, तो व्हाट डू यू थिंक? So I guess we are having around 45 days left for the CET. So one of the most important is the basic concepts.
which we can easily cover within 10 to 15 days. Then after that, most important is practice. Because without, if we clear the basics, but we didn't practice the questions, we are not able to cover that. And the one of the most important is practicing the mock test. So if you are in the college, we get limited time. So in weekdays we can solve at least one sectional mock, and on Sunday we can prepare fully. On Sunday we can solve a full length mock test. Uh, we must focus on the time that we are having two shifts. One is morning shift, that is from 9 to 11:30, and evening shift is 2 to 4:30, I guess. So we should, as we are having CET in coming days, so we should solve our test in that time, so we can analyze it in proper way. So I used to solve it in that limited time, and after that I used to analyze. So in analysis, I used to do like finding out the section which I have focused, which I have scored more, and identifying the weaker section. And from that, I used to plan which topic I have to cover in the next weekday. Okay, nice, nice, nice. So if you could hear guys clearly, the most important part about it is, mock analysis, right? So, and also she pointed out कि कैसे, your distribution should be there. तो mock analysis की बात निकली है. तो just two questions जो सबको होते हैं. मतलब the most, the biggest question that every student has is कितने marks देने चाहिए, ठीक है? And then mock analysis भी roughly कैसे करना चाहिए. So you could just tell me कि आपने कितने marks दिए थे roughly आपके time पे, और एक क्या rough analysis का आपका view होता था? So actually, I have started in the initial of my final year. So around I have given 30 to 35 mock tests, and means when around 30 I have analyzed the mocks, because in the last days we are unable to focus more. And then means Okay. Okay, so if you could see clearly, guys, ऐसा नहीं होता है कि 70-80 marks ही देने चाहिए, because I've heard a lot of students saying कि सर मेरे को तो 50-70 marks देने, अभी लास्ट 2 महीने बचे तो कैसे होगा? There are certain students जो एक दिन में दो दो तीन तीन marks भी देना start कर देते हैं. So guys, please don't do this mistake, as you can clearly see through Prachi's things कि she has done only 30-35 marks. Okay, so ऐसा necessary नहीं, marks are only to judge your weak and strong sections, as she said कि वी शुड एनालाइज कि कौन से सेक्शन में वीकनेस है, क्या टॉपिक्स वीक है, राइट? उसको वर्कआउट करते हैं. जैसे हमने एक डीप मॉक एनालिसिस का एक सेशन भी मैंने लिया था. ओके, यू कैन गो थ्रू इट. बहुत डिटेल्ड एनालिसिस लिया है मैंने. ओके, सो मेजरली गाइस डोंट फोकस ऑन द नंबर ऑफ मॉक्स. वी हैव गुड इनफ 70-75 डेज, तो आई गेस इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं. फर्स्ट ट्राई टू कवर योर क्वेश्चन सिलेबस. ओके, तो वन लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर प्राचीज, कि ये भी एक क्वेश्चन है जो आजकल बहुत ज्यादा कमेंट्स में आ रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या लास्ट 2 ढाई 3 महीने में पॉसिबल है सीईटी में अच्छा स्कोर लाना, इफ दी स्टूडेंट्स आर स्टार्टिंग नाउ? yes, it is definitely possible, because means we should have a patience and consistency for that. Because some students lose hope that अरे एक ही महीना बचा है या 2 महीने बचे कि हमें प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए. So some student lose their hopes in that. Like I was having a friends which lose their hope, and even they have studied for 2 years, but in the last days they have lost their hopes, and then they didn't perform well and took a gap again this year. So one of the most important thing I would like to tell that on the D day, it is most important to have a patience and be confident, because miss ये सुनते हैं हम कि अरे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने, इतने करने 2 आवर्स, 2.5 आवर्स में इतने होंगे या नहीं होंगे. बट जब हमारे कॉन्फिडेंस आता है तभी मीन्स वी आर एबल टू परफॉर्म इट वेरी वेल. ओके. ओके गाइस, सो एज शी राइटली पॉइंटेड आउट कि दो चीजें जो व्हिच प्राची की, फर्स्टली इज ऑफ कोर्स कि थोड़ा सा हमें एक मोटिवेशन रहना चाहिए, कि बहुत बार मोटिवेशन अलग अलग रीजंस की वजह से नीचे जाता है. इसीलिए बीच में मैंने एक वीडियो बनाया था फॉर मोटिवेशन गाइस, क्योंकि आई हैव सीन स्टूडेंट्स गेटिंग डीमोटिवेटेड, मॉक का स्कोर नहीं आ रहा है, या फिर उतनी पढ़ाई नहीं हो रही है, या फिर लिंक टूट रही है, राइट? बट सीईटी वालों ने आपके ऊपर एक बोनस चीज पे की है कि 15 days एक्स्ट्रा मिल रहे हैं. तो गाइस, आई गेस व्हाट शी सेड इज कंसिस्टेंसी, है ना? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई गेस. कोई कितना स्मार्ट है, कोई कितना इंटेलिजेंट है, दैट डजंट मैटर. आई ऑलवेज से व्हाट मैटर्स एट द एंड इज हाउ हार्ड वर्किंग यू.
तो consistent रहो, hardworking रहो. This is something that even Prachi has told us. Okay. So guys, mota moti, if you see what Prachi has told is majorly आप of course 3 months में crack कर सकते हो. The only thing that you need is consistency. ठीक है, एक proper mentorship आप अगर कर रहे हो जिससे आपको पता चले कि exactly कौन से areas में आप weak हो. Okay. So I guess that is something that we can take away. So be consistent, guys. I'd say make sure you are working really hard. आप ग्रेजुएशन में होगे, आप वर्किंग होगे, राइट, या फिर आप फुल फ्रीलांसर हो, मतलब फ्री टाइम अगर पूरे टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो फिर तो कोई बात ही नहीं है, राइट. सो मेक श्योर गाइज यू प्लान अकॉर्डिंगली, हैव अ गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल. आप आगे जाके मैनेजर बनने वाले हो, सो आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू बी गुड एट टाइम मैनेजमेंट. ओके, so that's all. Yeah, just yeah, yes, please. So I want to add one more thing. On the D day, it was an incident happened with my friend that during solving, she didn't focus on the screen. That on the last corner that it was mentioned that miss only it was mentioned about 100 question, and she spent almost 2 hours solving only 100, and it really affected her score. And one of the most important thing I want to add that during this journey, one mentor or any friend is very important. Yes. Oh, very well, very well. Because even we have heard, we hear it, this story, these kind of stories every year. कि स्टूडेंट्स एंड में जाके कुछ गड़बड़ कर देते हैं, नहीं पता होता है क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या फिर कैसे सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए. तो इसीलिए गाइज, वी एट टॉपरनिकस इसीलिए मेक श्योर कि वी आर गोइंग थ्रू प्रॉपर मॉक एनालिसिस सेशन through one-on-one basis, so that the students are at the end getting helped and getting boosted with their respective scores. तो दैट्स ऑल आई गेस गाइस. फेयर इनफ आइडिया आपको मिल गई होगी. एक डिटेल वीडियो प्राची के साथ बाद में बनाएंगे वंस सीईटी इज डन. लेट्स अंडरस्टैंड बाद में सेकंड एपिसोड में विद प्राची की एग्जैक्टली पुम्बा क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, क्या और एडिशनल डिटेल चीजें, प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग. ओके, ये तो बाद में की बात है. लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन दी प्रिपरेशन गाइस. तो इसीलिए मेक श्योर यू आर बीइंग कंसिस्टेंट एंड सारी चीजें प्रॉपर्ली कर दो. मॉक्स अभी देना स्टार्ट कर दो. आई विल बी मेकिंग अ वीडियो, डिटेल वीडियो वेरी सून. सो थैंक यू सो मच प्राची. हमारे एस्पायरेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल था ये एपिसोड. ओके, सो गाइज स्टे ट्यून्ड. आने वाले दिनों में वील बी ब्रिंगिंग इन मोर चैंपियंस विद whom we can interact and get our doubts. Okay, that's all from today's session guys. Thank you so much.